जो आपको हेल्प करेगा। इंटरव्यू जब तक आप खुद से नहीं लेके चलेंगे, जब तक आप इंटरव्यू के ढंग से खुद से नहीं देखेंगे, लेके चलने से मुराद उन क्वेश्चंस को देखना जो हमने टाइम एंड अगेन यहाँ पर डिस्कस किया। कुछ लोग वरीड हैं, उन्हें लगता है कि इस दफा तो उन्होंने फेवरेट जॉनरा पे क्वेश्चंस उस तरह से नहीं किए। दैट्स नॉट द सर्टेन थिंग, लेकिन उन्होंने फेवरेट जॉनरा पे पूछा और उन्होंने अच्छी खासी बात की कुछ केसेस में। हाँ, 2-3 केसेस ऐसे जरूर रहे हैं जिसमें उन्होंने, मैं और ये भी केसेस हम डिस्कस कर चुके हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इफ यू हैव प्रिपेयर्ड जॉन कीट्स और कोई ऐसा फेमस राइटर आपने प्रिपेयर कर रखा है जो आपको लगता है कि बड़ा ढंग का राइटर है, लेकिन उन्हें वो ढंग का राइटर नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इंटरेस्टेड इन जॉन कीट्स but they are not interested in John Keats. So you need to prepare something who's going to be your wall in case they are not interested in the first person. पहले ढंग के बंदे में अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो दूसरे को जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा, ये मेरी रिकमेंडेशन है। आज हमारे पास 2 इंटरव्यूज हैं, हम उनको भी देखेंगे। पहले हमारे पास जो है वो आई थिंक फ़हीम साहब हैं, फ़हीम का इंटरव्यू है, और इसके अलावा हमारे पास जो है नुमान का इंटरव्यू है। कोई पार्टिसिपेंट अगर इनमें से नहीं ज्वाइन कर पाता, मिस हो जाता है, सो डेफिनेटली कोशिश तो की जाती है लेकिन शायद हम प्रोवाइड कर नहीं पाते हैं अल्टरनेट डे, इसलिए हम पेश की माजरत कर लेते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड द अल्टरनेट डेज in case someone is going to miss his slot. Definitely it will be hard to manage the things. लेकिन उससे पहले कुछ चीजें, ऐसी चीजें जो बड़ी आसान हैं, इंटरव्यूज में पूछी जा भी रही हैं, लेकिन ये जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो मुझे लगता है जो हमारे जो इंटरव्यूज और हमारे जो इन तमाम चीज़ों को देखने वाले दोस्त हैं, हमें लगता है कि ये क्वेश्चन जो हैं आपको ज़रूर देख के जाने चाहिए, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर इन योर इंटरव्यू। अगर आप इनको इग्नोर करते हैं डेफिनेटली चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। सो जी, मेरे ख्याल में जो ये चीज़ें आपको नोट भी कर लेनी चाहिए, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा, लेकिन आपको ये चीज़ें नोट करनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कोई 40-50 के करीब हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ सारे के सारे शेयर करें, आपके साथ ये डिस्कस करें। 36 फॉन्ट साइज कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है आपको जॉन कीट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। जॉन कीट्स की एक पोएम है जिसको हम लैमिया के नाम से जानते हैं, इसकी समरी जरूर पढ़ के जाइएगा, ढंग से देख के जाइएगा। ओके जी, इसके बाद जो है शेक्सपियर का फर्स्ट फॉलियो जो है इसको जरूर देख के जाइएगा कि शेक्सपियर ने फर्स्ट फॉलियो क्या था, कब पब्लिश हुआ, किसने इसकी पब्लिकेशन की, क्या इसके अंदर डिटेल से चीजें थी। So in Faisabad, central interview are being conducted very easy ones में based on Multanis. Okay, इंशाल्लाह चेयरमैन सेम ही रहते हैं, सो नो वरीज, वो वही चेयरमैन जो है वो कंडक्ट करेंगे। अच्छा जी, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आज हम मिससेलिनस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग दोस क्वेश्चंस that are highly important and highly important and highly important. I will reiterate this term. You are supposed to prepare these questions, and in case अगर आप इनको स्किप करते हो तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे स्किप कीजिएगा। आप कोई भी दूसरे तीसरे इंटरव्यू को उठा के देख लीजिएगा, बात घुमा फिरा के यहाँ पे जरूर आ जाएगी कि आप यहाँ से अपने इंटरव्यू को मूव ऑन कर सकेंगे। मैथ्यू आर्नल्ड के ड्रामा के बारे में अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। मैथ्यू आर्नल्ड का ड्रामा जो है वो आपने कौन सा पढ़ रखा है? आप जानते हैं कि इसका जो है वो मिलोप ट्रेजेडी थी जो इसने लिखी थी। बाकी डिटेल्स अब खुद से भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा, बिकॉज वी हैव अ लॉट मेनी क्वेश्चंस टू डिस्कस टुडे। ओके जी, हाँ, हमें जो है ये समझना है कि हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि ये जो एक करैक्टर है फादर ब्राउन स्टोरीज जो है, ये करैक्टर किसने जो है वो क्रिएट किया है? आप जानते हैं जेके चेस्टरटन ने ये जो करैक्टर है क्रिएट किया हुआ है, लेकिन डिटेल्स जो है वो फिर भी देख लीजिएगा। फादर ब्राउन स्टोरीज जो है वो इस करैक्टर को किसने बनाया? इन मेमोरियम को देख के जाइएगा। समरी इसके डेफिनेटली ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ इनकी समरी जो है वो देख के जाइएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है मुझे वेस्टलैंड के हवाले से जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो वेस्टलैंड जो है इसके सेक्शंस के नेम जो हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं वेस्टलैंड के जो हैं।
आगे बात करें तो हमारे पास जो है मूवमेंट्स, कल सादा लफ्जों में हमने कुछ मूवमेंट्स आपके साथ डिस्कस की थी। इमेजिज्म एक ऐसी मूवमेंट है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्पेसिफिकली देख के जाइएगा। बाकी मूवमेंट अगर आपको ना भी याद रह सके, इमेजिज्म को जरा याद रखने की कोशिश कर लीजिएगा। जैकोबियन एज, बाकी एजेस भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जैकोबियन एज को आप जरूर देख के जाएंगे। जैकोबियन एज को जैकोबियन एज क्यों कहा जाता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ द नेम। कैरोलियन एज को जो है वो कैरोलियन एज क्यों कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो ये चीजें जो हैं वो आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। किसी मूविंग ऑन फ्रॉम हेयर, आपको रिचर्डसन और फील्डिंग का आपस में रिलेशनशिप पता होना चाहिए। दोनों के दोनों जो हैं वो नॉवेलिस्ट थे, दोनों के दोनों लिखते थे। क्या रिलेशनशिप है पैमिला का, क्या रिलेशनशिप है इसके अलावा फील्डिंग के जो है लिखी हुई पैरोडी का। सो इन 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 रिलेशनशिप्स को जरूर आपस में देख जाइएगा। 10th नंबर पे क्वेश्चन आपके पास है जिसको आप लाजमी देखेंगे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को देखेंगे। ये बड़ी एक सादा सी जो है वो डेफिनेशन है। ये किसने इस्तेमाल की थी, देने वाला कौन था, सबसे पहले किसने इसके ऊपर बात की थी, किस तरह से प्रोसीड फर्दर हुए थे, ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो आप देखिएगा। 11th नंबर पे आई विल रिकमेंड कि लेक पोइट्स को आप स्किप नहीं करेंगे। लेक पोइट्स के मतलब क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। आप जानते हैं एस.सी. कॉलरिज, रॉबर्ट सर्दे, विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं ये एक लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे इंग्लैंड के, वगैरह वगैरह। बाकी डिटेल्स आप देख लीजिएगा। मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेटाफिजिकल पोइट्स क्या होते हैं, क्या थे, ये जो टर्म कहाँ से निकली थी, और कौन था वो क्रिटिक, सैमुअल जॉनसन था या कोई और था जिसने ये जो है वो दी थी, और मेटाफिजिकल का मतलब क्या था, वजह क्या क्या थी, क्यों दिया गया, ये पोइट करते क्या क्या थे, इन चीजों को जो है वो देखिएगा। 13 नंबर पे इंग्लैंड के जो अभी मौजूदा पोइट लॉरेट हैं उनको देख के जाइएगा कि अभी जो प्रेजेंट पोइट लॉरेट हैं वो कौन हैं। मुझे नजर नहीं आ रहा, आई एम सॉरी अगर मैंने स्पेलिंग इसके गलत लिख दी हो। ओके, इट इज LAUREATE, ठीक है। सो पोइट लॉरेट हैं वो कौन है, और खसूसन जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरेटशिप कब दी गई, इससे पहले पोइट लॉरेट कौन था, उससे पहले पोइट लॉरेट कौन था, और जो है वो कहाँ तक ये सिलसिला रहा। ये बड़े फेमस जो है वो टर्म्स है। आप जानते हैं कि ये लॉर्ड एल्फ्रेड टेंसाइन भी जो है वो इससे पहले थे, और सॉरी इसके बाद थे। तो ये एक सीक्वेंस बड़ा इजीली अवेलेबल है ब्रिटेनिका पे, एक वेबसाइट पे, उस सीक्वेंस को याद कर लीजिएगा, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन जो है वो दैट इज रिलेटेड टू उन लोगों से है जिन्होंने नॉवेल्स को चूज किया है। कल भी जब हम बात कर रहे थे शफकत आंसर कर रहे थे, काफी टाइप्स को हमने डिस्कस किया था, लेकिन जिसके बारे में ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं वो एपिस्टोलरी नॉवेल्स हैं। आप जानते हैं जब खतूत की शक्ल में लिखा जाता है। सो हमारे पास जैसे रिचर्डसन का पेमिला है, जिस तरह से क्लैरिसा हार्लोव है, ये जो नॉवेल्स हैं हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जी हमारे पास जो है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एक बुक थी चार्ल्स डार्विन की। मैं ये नहीं कहता कि आप जो हैं इस किताब को पढ़ के जाइएगा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का कम अज कम ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि इसने लिटरेचर के ऊपर क्या इफेक्ट छोड़े थे। 1859 में जब ये आया था तो लिटरेचर में इसके ऊपर क्या असर छोड़े थे। थोड़ा फॉन्ट साइज कम कर दें। ओके, इन तमाम क्वेश्चंस के बाद 50 क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की सिटिंग में, और बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे क्योंकि हमें इंटरव्यूज भी कंडक्ट करने हैं कि फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में शेयर किया जाए, लेकिन इनको जरूर देखिएगा। 16 नंबर पे आपके पास जो है वो कैवेलियर पोइट्स हैं। कैवेलियर पोइट्स हैं, क्या होते हैं, कौन थे, वजह क्या थी। रॉबर्ट हैरिक को ढंग से डिस्कस कीजिएगा, रिचर्ड लवलेस के ऊपर बात कीजिएगा, और ये बताइएगा कि चार्ल्स वन को किस किस तरह से जो है वो स्पोर्ट्स करते रहे हैं, और इनकी वजह, ये जो नेम है, इनके एटमोलॉजिकल ग्राउंड्स क्या क्या हैं, फ्रॉम विच लैंग्वेज द वेरी वर्ड क्वेलियर हैज बीन टेकन। सो यू आर सपोज्ड टू टॉक अबाउट दीज क्वेलियर पोएट्स एंड द रीजन ऑफ देयर नेम। On number 17, definitely we cannot ignore the very questions about Elizabethan age.
My questions that I am going to recommend you is, do not ignore the questions about the glorious age. Now remember, whenever we talk about Elizabethan age, this age is considered, and in fact, it is not only in terms of literature, but in all the terms, it is a glorious age. So you are supposed to talk about the glorious age, why Elizabethan age is considered the glorious age. You will talk about all the things, all the upgradations, all the movements that been there from 1550s onwards. So you will talk about drama and all those things. Moving on, the next question is, you, in case you are interested in drama, my recommendation is you are not supposed to ignore Rolf Doister. That is very important comedy. So my recommendation is, respected participants, please read out the summary of Rolf Doister. That was published somewhere in 1553, if I'm not wrong, and if my memory is not deceiving me, and was completed in 1554. So, but later on, it was somewhere registered, and the people, they acknowledged the very culmination in 1566 or 67. Though they are not going to ask you about the years of publication, but you are requested to prepare all these things. Okay, now on number 19, the very magnum opus of Chaucer, the Canterbury Tale, is important, but some factors are important from the whole Canterbury Tales, how Chaucer is portraying the very image of the woman one. So what do you understand when he is talking about the female characters? So you need to talk about female character plus the religious characters in specific. So in this way, you are going to talk about Chaucer. Remember, participants, I will reiterate here. I want to focus once again. You cannot proceed further in your interview without these miscellaneous questions. Definitely, you need to prepare your favorite genre, your favorite area, and all the things, but do not ignore these questions. Okay, so on number 20, we have the question Troilus and Cressida, that was written by William Shakespeare. So basically, you know, Geoffrey Chaucer and William Shakespeare, these were the two writers, two authors who worked on Troilus and Cressida. So you need to talk about Troilus and Cressida. My recommendation is, in case you can go through the summary, that is, you know, the recommended one. Otherwise, just try to understand the difference. What is the difference between these two culminations? Okay, the 21, the next question is talking about, once again, the novel, and this time I'm going to talk about Picaresque novel, Picaresque. Sometimes they're going to ask you the spellings of the Picaresque, so you are requested to memorize the basic spellings. Okay, so these are the questions, and talking about the next questions from the novel. Once again, in novel, you are supposed to go through another type, that is the Gothic novel, and you need to understand what is the theme of the Gothic novels. Okay, then on number 3, you are supposed to talk about what happened in 1789. Definitely, I'm talking about the French Revolution. And then you need to talk about what happened in 1798. By the way, this question is for everyone. What happened in 1789? I have already mentioned. So what happened in 1798? I haven't mentioned it. So what do you feel? What is your answer? Maybe a single word is going to answer the question. So what happened in 1798? That is a question. Okay, the publication of lyrical ballads. Is everybody silent, perhaps? So you are typing the answer. Okay, yes, revolution was there. Okay, please take the screenshot of these questions if you want to, because I'm moving from this screen to the next one. I'm sure that you have taken the screenshot. In case you haven't, you are requested to share it in the chat box, so I may move back to that screen.
Okay, then 24, the next question is. On number 24, you need to understand what is the difference between modernism and postmodernism. All right. Okay, Fahim, please go on. And you're requested to please write then in the chat box once you are done, once you have taken the screenshot. Fahim, I'm waiting. Okay, thank you so much. In fact, the screenshot, the whole mechanism is very quick. You know, Mark Zuckerberg is actually planning to introduce a feature in WhatsApp and Facebook chat. Like you will receive a notification literally from Facebook and WhatsApp that the next person has taken the screenshot of your chat. So in this way, Mark Zuckerberg is planning to secure the Meta products, that is a Facebook, Instagram, and the Twitter, sorry, not Twitter, but the WhatsApp, Facebook, and Instagram. So the screenshot policy is really dangerous because a lot many people, they secretly take the screenshot and the things, whatever happens is not fine. Okay, moving on from here, coming back to the topic, the question is 25. Well, we have already talked about wasteland. In fact, T.S. Eliot's The Wasteland. So you need to memorize some lines from the poem. It will definitely improve your credibility that the panel, they're going to take some positive vibes from your side. Okay, then the next novel, and please go on and read the summaries of these novels. Heart of Darkness. Heart of Darkness is very important because it is going to give you a detailed insight of Joseph Conrad's writing. I'm talking about The Wasteland, Sana. Let me write it in front of you. Heart of Darkness, that was published in 1899. I'm sorry if I'm wrong about the dates, but I think it was published in 1899. Okay, 27th, we have the very famous character, George Eliot. George Eliot, the notorious lady, because you will be asked a lot many questions about her pen name and why George Eliot, what is the name of the wife of George Eliot, what was the name of the husband of George Eliot. In fact, they will try to confuse you. George Eliot, in fact, she was a female, so it's not possible, at least मुस्तकबिल का मुझे नहीं पता, कोई एक्ट पास हो गया हो तो अलग बात है, तब तक पॉसिबल नहीं था कि फीमेल जो हैं वो किसी फीमेल से शादी कर सकते. So George Eliot की का पेन नेम, व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड जॉर्ज एलियट्स पेन नेम, क्यों था इसका जो है वो, बाकी सारी की सारी चीजों को देखिए. इसके साथ एक और क्वेश्चन भी जो है वो अक्सर पूछा जाता है, दैट इज अबाउट द जॉर्ज ऑरवेल. सो व्हाट इज द हिस्ट्री एंड द स्टोरी बिटवीन दिस Orwell and the Orwellian methodology, Orwellian thought, what is the Orwellian approach and all these things. So you are requested to please work on all these things. On 28th number, we have another question, and that is about the mill on the floors. The mill on the floors is very important elimination. So you are requested to read the summary of the mill on the floors. On 29, we have the next question, that is about the Sine Wolf. That is a very important poem, Sine Wolf. I'm sure that the Sine Wolf को आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ रहा तो इसकी समरी को देख लीजिएगा. सर्वाइविंग पोएम है हमारे पास जो है वो. साइने वुल्फ जो पोएम्स हैं, ये राइटर था. साइने वुल्फ जो है, इसकी क्या क्लेमिनेशन है, क्या क्या इसने काम किया था, ये सब चीजें जो है वो आप देख लीजिएगा. ओके जी. Then the next question is how and why the year of 1859 is important. Let me answer this question. 1859 is important because two important books been there, as I've discussed earlier. The first one was The Origin of Species. For the very first time, Charles Darwin changed the scenario of the things, because people before that, they believe that God is there somewhere on I don't know, should I say this or not, but
as per the Christianity and the beliefs of the Charles Darwin, he was having this view that there is no God. So man is mainly the production of science and the monkeys and all these things. So the origin of species is basically the name of the book that is very important, and you are requested to read the summary. And the second important book is the Charles Dickens' A Tale of Two Cities, that was published in 1859. So these are two important books. So in case they are going to ask you the question, what happened in 1859, why 1859 is important, you are requested to please share the detail of these two books. Okay, then another from 1859, another year in the history is important, that is 1066. You know, in 1066, Harold, son of Edward the Confessor and the King of England, he was defeated in the Battle of Hastings by the William the Conqueror. So you need to go and you need to bruise some details about this incident. Talking about the next question, that is interlude. So you are supposed to explore the basic details of the interlude, that is basically the short dramatic piece. So what are the interludes, और कुछ interludes के जो नाम हैं आप उनको भी डिटेल से देख लीजिएगा. They are definitely going to help you in your final interview. Okay जी. On 32 we have the Shepherd's Calendar. आप जानते हैं कि एडमंड स्पेंसर का जो है वो लिखा हुआ शेपर्ड कैलेंडर है, लेकिन शेपर्ड कैलेंडर के साथ जो चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी है वो है शेपर्ड गार्लैंड, जो कि हमारे पास जो है वो मिकल ड्रेटन का लिखा हुआ है. और मिकल ड्रेटन जो है शेपर्ड कैलेंडर तो 1579 में लिखा गया था, लेकिन ये जो शेपर्ड गार्लैंड जो है हमारे पास ये 1893 में लिखा था. सो फर्स्ट इज शेपर्ड कैलेंडर, that was written by Edmund Spencer, and the second one is Shepherd Garland. So you need to understand the difference between them, that the Shepherd Calendar, as I was telling you a moment ago, it was written in 1579 by Edmund Spencer, and the Shepherd Garland was written by Michael Drayton. So you are requested to browse the basic details of these two writers. Okay, the first folio, as I've already mentioned, कि किस किसने इस पे पब्लिश किया था, क्या क्या चीजें थी, इनको देख के जाइएगा. सेटायर क्या होती है, सेटायर की टाइप्स जो हैं इनको भी देख के जाइएगा. सेटायर और इनकी टाइप्स को मिस नहीं आप करेंगे. ओके जी. इसके अलावा जो है हमारे पास जॉन मिल्टन का है एरोपागेटी का, जो हमारे पास एक बड़ी फेमस इसकी बुक है, उसका जो सब्जेक्ट मैटर है उसको देख के जाइएगा. The subject matter. Okay, I'm basically completing it, but in case you're going to take the screenshot, so I want to facilitate you guys. Okay जी. ठीक है, मैं करता हूँ, उसको देखता हूँ. ओके जी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट, हमारे पास जो हैं वो दो एलिजीज के हवाले से हैं. पीबी शैली ने एक लिखी थी, एडेनिस की बात कर रहा हूँ, और दूसरी जो है वो लॉर्ड एल्फ्रेड टेंसाइन ने लिखी थी. मेरा मशवरा है आप पीबी शैली को इग्नोर ना कीजिएगा. पीबी शैली इनफैक्ट ही वाज द लॉर्ड पर्सी शैली, और जो लॉर्ड एल्फ्रेड टेंसाइन है, दोनों लॉर्ड्स थे. इनके दरमियान अक्सर हो गया था आपसे ये पूछा जाता है कि क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि दोनों के अंदर कॉमन थी. बहुत कम लोग होते हैं जो कि इनको डिटेल से देखते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि इनकी इन दोनों के एलिमिनेशन को आप जरूर डिटेल से जो है वो देख के आइएगा. On 36 number, we have a question about the dark comedy. Someone asked me this question a few days back even, and I told them कि ये एक ऐसा जो है वो dark comedy is a group of play that was written in an Elizabethan time, और जिसमें जो है वो कॉमेडी तो होती थी और सारे के सारे जो हैं उसके इंग्रेडिएंट्स तो होते थे, लेकिन बड़ा
सॉम्बर किस्म का, सॉबर किस्म का इसका जो है वो ओवरऑल एटमॉस्फेयर होता था। सो जब मैंने बताया था कि शेक्सपियर का मैयर फॉर मैयर जो है वो ट्रायलस एंड क्रेसिडा जो है डार्क कॉमेडी की एग्जांपल्स हैं। मजीद इसको डिटेल से देख लीजिएगा। मूविंग ऑन क्विकली फ्रॉम हियर, आपको देखने की ज़रूरत है कुछ नेम और वो हमारे पास हैं। आप एक और किताब देखेंगे एडमंड स्पेंसर की, इसकी समरी को देख लीजिएगा, फेरी क्वीन को जो है। एंड वंस अगेन द स्पेलिंग्स आर इम्पोर्टेंट, स्पेलिंग देख लीजिएगा कि फेरी क्वीन के वो क्या हैं, वो आपसे स्पेलिंग्स भी बाजू का पूछ लेते हैं। सो जी, इसके बाद हम जो हैं वो अब बात कर लें तो जॉन वाइक्लिफ का करैक्टर इंपॉर्टेंट है। जॉन वाइक्लिफ के करैक्टर को, ये सब के सब क्वेश्चन आपको तैयार करने में शायद ही कोई 5 घंटे लगें, इससे पहले आसानी से तैयार हो जाएंगे। हिस्ट्री में कुछ चीजें, कुछ ईयर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कुछ हुआ था 1649 के अंदर, कुछ हुआ था, ये देखिएगा 1649 में क्या हुआ था, क्यों इंपॉर्टेंट था। कुछ हुआ था इससे पहले 1603 के अंदर, कुछ हुआ था 1625 के अंदर, कुछ हुआ था 1660 के अंदर, कुछ हुआ था 1685 के अंदर, कुछ हुआ था 1688 के अंदर। इनफैक्ट ये सारी चीजें जो है वो डिटेल से देख के जाइएगा, आपको काफी हेल्प आउट मिलेगी। आप जानते हैं कि चार्ल्स फर्स्ट को बिहेड किया गया था, जेम्स वन जो है वो आया था 1625 में, चार्ल्स वन आया था 1660 में, रिस्टोरेशन एज स्टार्ट होती है 1685 में, विलियम जेम्स आ जाता है और 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होती है। लेकिन ढंग से देख लीजिएगा, काफी चीजें आपको जो है वो पता चल जाएंगी। एक पोएम है जिसको हम जो है वो कहते हैं हस्बैंड्स मैसेज, जो है वो हस्बैंड्स मैसेज एक पोएम है जो लिखी गई थी मेरा ख्याल है एंग्लो सेक्सन के ज़माने में। इसकी वजह शोहरत ये है कि ये एक लव पोएम समझी जाती है, सो इसके थीम्स को भी अक्सर पूछा जाता है, और चूंकि ये पहली लव पोएम है तो इसके बारे में भी बात होती है। 41 नंबर पे I would like to talk about additional spectator, और इनफैक्ट द स्पेक्टेटर जो हैं इनकी अहमियत क्या थी, इन्होंने क्या काम किया था, ये देख के जाइएगा कि हमारे पास जो हैं वो ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके जी, देन हमारे पास जो हैं वो टॉमस कार्लाइल के जो हैं वो कुछ वर्क इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि टॉमस कार्लाइल का सार्टर रीसार्टस जो है आप इसको देख के जाएंगे। इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट मेनी थिंग्स, न्यू थिंग्स दैट यू कैन इजीली डिफाइन इन योर इंटरव्यू। 43 नंबर पे हमारे पास कुछ सिस्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रॉन्टी सिस्टर्स। ब्रॉन्टी सिस्टर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, एंड हाउ यू कैन इग्नोर वुदरिंग हाइट्स। इसकी मूवी जो है वो भले आप आज ही शाम में देख लीजिएगा, 1847 के अंदर ये लिखा गया था, बड़ा जबरदस्त इसके जो है वो सिनेमैटिक वर्जन है, वो देखिएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो हैं ये हैं जी यस, जॉन गावर की एक पब्लिकेशन थी, हम अभी डिस्कस कर रहे थे, जॉन गावर की कन्फेसियो अमेंटिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, CONFESSIOAMANTIS, ये किस लैंग्वेज से है, इसके मीनिंग क्या है, इन तमाम चीज़ों को भी देख लीजिएगा। अच्छा जी, विक्टोरियन एज जो है, विक्टोरियन एज के जो मॉरल थीम्स हैं वो क्या क्या होते हैं, मॉरलिटी से मुतालिक जो हैं वो क्या चीज़ें हैं जो वो डिस्कस करते हैं, मॉरल थीम्स को, इनको तमाम को देख लीजिएगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन सो दैट वी मे प्रोसीड फर्दर। Once you are done with the screenshot, please write done in the chat box. That is the only tool with me जिससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आपने ले लिया। आपने नहीं लिखा लेकिन मैंने फिर भी अंदाजा लगा लिया कि स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। ओके अच्छा जी ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन को ढंग से देख के जाएगा यार। अच्छा जी 46 नंबर पे हमारे पास जो है वो टी.एस. एलियट है। टी.एस. एलियट का लिखा हुआ एक शोरा अफाक काम है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। इसको नीचे करें, आई एम अनेबल टू से। So tradition and individual talent is very important. That is basically a critical essay. So you need to talk about the critical essay and the Hamlet and his problems. So the question from the very critical essay of T.S. Eliot will be about the Hamlet and the problems of the Hamlet. Okay, then you are requested to
explore the details of the Paradise Lost. And when I talk about Paradise Lost, definitely you need to explore the language of the Paradise Lost, the themes of the Paradise Lost. You need to explore these things, and मेरा ख्याल है कि यही चीजें होंगी। और दूसरा वो सैटर्न वाली जो जंग है वो तो आपको पता ही है, उसके ऊपर तो आप बात कर ही सकते हैं। वेटिंग फॉर गॉडो जो है वो कहाँ रह गया है, इसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और इसी का एक और भी प्ले है, अगर किसी ने पढ़ रखा है, दैट इज एंड गेम को देखिएगा। इसके साथ एक टर्म आपको मिल जाएगी, दैट इज द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, उसको देख के जाइएगा। At 49 we have a movement and that is the Oxford movement। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है वो क्या थी, इसको जो है वो देख के जाइएगा, इस मूवमेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिएगा। आप जानते हैं कि it was basically a religious movement and the Anglican Church, they were leading this movement. And what was the demand of the movement? The members of this movement, they were associated with the Oxford University. That is the reason it is known as the Oxford movement. And they were talking about the reinstatement of lost Christian tradition. So they were talking about all these things. अच्छा जी, यहाँ से हम जो हैं वो आगे प्रोसीड फर्दर करते हैं, एंड देन हम जो हैं 50 नंबर पे हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है, दैट इज यस, एच.जी. वेल्स जो हैं, इन्होंने जो साइंटिफिक फैंटेसीज लिखी थी, साइंस के अंदर इनका जो रोल था, आप इनको देखेंगे, टाइम मशीन है, इनविजिबल मैन है, ये दो जो है वो इन्होंने वंडरफुल कलेमिनेशन लिखी थी। आप एच.जी. वेल्स के इन दोनों वर्क्स को जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर पे आपके पास जो है वो टाइम मशीन है, एंड देन आपके पास जो है वो इनविजिबल मैन है। So this is something, in case you have missed anything, आप उसको दोबारा से भी नोट कर सकते हैं। इस द फर्स्ट स्क्रीन, और इसके ऊपर जो है वो हमने लिख भी दिया है कि ये पहली स्क्रीन है। इसके बाद जो है हमारे पास जो है ये हमारे पास सेकंड स्क्रीन है, एंड देन इस द थर्ड स्क्रीन, और ये हमारे पास जो है वो इस तरह से मूव ऑन करते हैं। सो जी, इन क्वेश्चंस को आप देखेंगे, आई एम श्योर दैट यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट्स। अभी हम अपने इंटरव्यू के सेशन की तरफ बढ़ते हैं, एंड नुमान इज देयर विद अस। नुमान, यू आर रिक्वेस्टेड टू अनम्यूट योरसेल्फ। हम एक ही इंटरव्यू करेंगे बिकॉज हम 6 o'clock तक जो है वो एक ही इंटरव्यू आसानी से कर सकेंगे, बाकी जो इंटरव्यू है वो हम कल करेंगे। नुमान, आई एम श्योर दैट यू आर परफेक्टली फाइन एंड ऑल राइट। Yes, I'm fine, sir. I'm Welcome audible to you. Yes, you are audible. Welcome to the mock interview session. So, Numan, talking and proceeding further from your introduction, give us your brief introduction. Yes, I am Numan Mahmood Asdi, son of Muhammad Mahmood Qadri. I belong to district Rahim Yar Khan. I completed my master's degree from University of Education and did my graduation from Government Postgraduate College, which is affiliated with Islamia University Bahawalpur, and I got second position in intermediate in Bahawalpur board and completed my matriculation from a local secondary school. And after completed my master degree, I joined Higher Education Commission Department as a college teaching interning for 2 times. Okay, that's wonderful, Numan. Because we're running short of time, so what we're going to do, we're going to rejoin this session and we will proceed further from here. Okay? Okay, sir.